So much to study, so much to remember, so much to learn for your exams. Now, at this point of time, we need a savior. We need something that can help us for our exams and help us revise in a better way. No, this video is not your revision tips and tricks. We have already seen various revision tips and tricks, but this video will help you in your notes. So how do you make your notes? Every student knows the importance of note making. How and why notes are very, very important. So when the teacher is teaching you in the class or when you're learning a particular subject, it becomes very important for you to make your own notes, right? So in this video, we are going to study various tips. I'm going to share with you all the various tips that you can use and make your notes very, very effective, and so that they can help you in the long run, at least till your exams. So I am Smruti Shukla. Welcome back to youtuition, and let's get started with the video. So let's talk about the basics first. So सबसे basic चीज़ आपको क्या चाहिए होगी नोट बनाने के लिए is a good study space. Now why a good study space is because unless and until you have a good study table or a good study space, you won't feel like studying. इसलिए ये बहुत ही essential है. Though basic but very essential. So if you do not have a proper study space at your place, you can go refer to one of my videos when I have taught you in several ways on how to create your own study space. So go watch that video and create your own cozy, comfortable study space. Now, talking about the things that you require to make notes, सबसे basic तो होगा आपका notebook, right? You need a notebook first to create your own notes. तो अब नोटबुक में सबसे इम्पॉर्टेंट आप कैसे यूज़ करेंगे, मैं सजेस्ट करूँगी दैट गो फॉर प्लेन शीट्स. ना प्लेन शीट्स का ये प्लस पॉइंट होता है दैट यू कैन यूज़ द एंटायर थिंग and you can use your own creativity to make your own notes. You want to make a flow chart, you want to make a diagram, you want to write the formula, you want to write in points or paragraph, whatever you want is you can do it over here. Now this is not a compulsion, of course. You can use your own notebook. It can be a lined one. Now if you're using a notebook, I would suggest go for the spiral binding one. Now इसका ये प्लस पॉइंट होता है कि फोल्ड करने में इट्स वेरी इजी. दिस इज़ माई डायरी. आई यूज़ इट फॉर एवरी नोट थिंग विच आई डू, राइट. तो आप ऐसा नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं और इसको टेयर ऑफ करना भी बहुत ईजी होता है इन केस यू वॉन्ट द पेपर. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड अगेन टेल यू इज़ use of flashcards. Now this is the only paper, this is the only color basically that's remaining from the entire bundle. Bundle में बहुत सारे colors थे, वो सारे हमने use कर लिए. ये last वाला बाकी तो मुझे लगा why not show it in the video and give you also an idea. Now you can use this paper, you can use your glitter वाला pen, chunky वाला pen, whatever you have on this sheet, this type of sheet on various colors. Okay, इसका करना क्या है, अब इसको हम fold करेंगे into half and then the other half. So what do I get? I get 4 parts or 4 different papers from this one sheet. Now what am I going to do is इस चारों पार्ट में मैं वो वाले टॉपिक्स कवर करूँगी जो मुझे याद नहीं रहते. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई थिंक दैट आई माइट टेंड टू फॉरगेट द मैथ का फॉर्मूला, तो मैं वो फॉर्मूले यहाँ पे सारे लिखूँगी एक शीट पे. सेकेंड पार्ट पे आई माइट टेंड टू फॉरगेट अ डायग्राम, वो डायग्राम मैं यहाँ पे लिख दूँगी. कुछ जोग्राफी का कुछ टर्म्स में वो याद नहीं आता तो मैं वहाँ पे लिखूँगी. कुछ डेफिनेशंस मुझे याद नहीं आता तो वो इस पार्ट पे आ जाएंगे. तो इस तरह से मेरे पास छोटे छोटे फ्लैश कार्ड टाइप के हो जाएंगे और मैं उसको एक रबर बैंड में करके या जैसे भी करके मैं उसको रखूँगी. एंड वेन एवर आई एम फ्री, ओके, आई माइट गो थ्रू देम जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ. उसको देखना है बस एक फ़ोटोग्राफ की तरह जब भी आप फ्री हों. और देखने से क्या होगा, देखने से ये होगा दैट वो चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगी और वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी. थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने बस देख लिया एंड चुट्टी की तरह याद हो जाएगा, ठीक है. तो यूज़ सम कॉमन सेंस एंड स्टार्ट स्टडिंग. सो ये था मेरा एक टिप which you can use for your note making. Second thing which I would like to emphasize on is the use of good pens. Now you can use different color pens. You can use a black pen for the topic name and then a blue pen for the entire content. Now what happens is when you use different colored pens, it creates an attraction. The thing looks very neat and very tidy and hence you feel like studying. Now मेरा third point भी इसी से related है that when you are making your notes, make sure that your notes is very neat and very beautiful looking. Now I am not asking you all to create may decorate it basically.
मैं वो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट व्हेन योर नोट्स आर गुड, व्हेन योर नोट्स आर वेरी नीट एंड टाइडी, यू फील लाइक स्टडिंग देम, यू फील लाइक लुकिंग एट देम ऑल द टाइम। तो नोट्स अच्छे बनाएंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा, है ना, और फिर आप पढ़ने बैठेंगे। एंड देन यू कैन ऑल्सो शेयर इट विथ अदर्स एंड शो देम लाइक हाउ द वे यू हैव क्रिएटेड योर ओन नोट्स। तो पेन डिफरेंट यूज़ करें ताकि एक अच्छा फ्लो आए आपके पढ़ाई में, आपके नोट मेकिंग में। थर्डली, एक अच्छा नीट एंड टाइडी नोटबुक बनाएं अपने लिए, या अच्छे नोट्स बनाएं अपने लिए। अगर आप पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ फाइल टू फाइल देम वन बाय वन। इस तरह से आपका एक पूरा फाइल बन जाएगा नोट अपने आपके सारे नोट्स का। फोर्थ थिंग दैट आई वुड स्ट्रेस अपॉन इज़ do not use textual language while you're using or making your notes। अब नोट्स अगर आप टेक्सचुअल लैंग्वेज के साथ में बना रहे हैं और तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड टू मेक द नोट्स। उस नोट्स का फिर मतलब क्या रहा, राइट? तो आपको नोट्स बनाने हैं अपने ओन लैंग्वेज में। क्रिएट योर नोट्स इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही को वो नोट्स पढ़ने हैं एग्ज़ाम के टाइम पे या रिविजन के टाइम पे, राइट? और कोई तो वो नोट्स आके पढ़ने वाला नहीं है, ये आपको ही पढ़ने हैं और आप ये नोट्स अपने लिए बना रहे हैं। तो मेक श्योर यू आर मेकिंग योर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। यूज़ स्मॉलर शॉर्टर सेंटेंसेस, यूज़ ईजी लैंग्वेज, नॉट टू हाई फाई लैंग्वेज। एंड टेक्सचुअल लैंग्वेज तो बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स ऑल्सो डू नॉट मेक योर नोट्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट। Now what happens when you make your notes in a paragraph format? इतना लंबा पैराग्राफ देखिए, you don't feel like studying, you feel lethargic, इतना सारा कौन पढ़ेगा। But then on the other hand, if you make your notes in point format और पॉइंटर्स में अगर आप लिखते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू सी एंड अंडरस्टैंड। आप उसको देख के ही समझ जाएंगे कि लिखा क्या है आपने। सिमिलरली इफ इन द एग्ज़ाम एज वेल, एग्ज़ाम में भी जब आप आंसर्स लिखते हैं तो मेक श्योर यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन पॉइंट फॉर्मेट सो दैट इट्स ईजी फॉर योर टीचर to check the papers. So the next thing which I feel is very very important is writing in your own language। ये बात तो मैंने डिस्कस कर ली है आपसे, लेकिन वो ओन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में थोड़ा आसान तरीके से लिखना होता है। But then when suppose if you are not able to understand any concept or if you're not able to understand any topic and your friend explains it to you in Hindi or in Marathi, you get that thing clear over here very nicely। तो करना क्या है, आप जब अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपको जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। बेसिकली यू कैन यूज़ हिंदी और मराठी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू कंफर्टेबल विथ, ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें टेक्सचुअल लैंग्वेज समझ में नहीं आती और किसी ने, फॉर एग्जांपल हो सकता है टीचर ने हमको हिंदी में बताया हो तो हिंदी में हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो हिंदी में लिख लीजिए, उसके आसपास एक बॉक्स बना दीजिए, सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अल्टीमेटली अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ योर नोट्स नॉट एनी वन एल्सेस, ओके। तो अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा नोट्स ही हिंदी में बना देंगे या मराठी में बना देंगे, नो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज इन विच यू गोइंग टू राइट योर पेपर, राइट? तो इसलिए इंग्लिश ही यूज़ करना है। बट ये उन चीज़ों के लिए है जो आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है समझना और मैं हिंदी या मराठी में बेटर समझ सकता हूँ, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई टॉक ऑफ योर नोट्स, of course writing your notes in having flowcharts, having diagrams and having tables for distinguish between and different various classifications, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स पे यूज़ करना ज़रूरी है ना। वाई ज़रूरी है? अगेन मैंने बोला कि पैराग्राफ में आप इतना सब कुछ लिखेंगे तो पढ़ने में आपको ही बोर होगा। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर यूजिंग फ्लो चार्ट्स, योर डायग्राम्स, टेबल्स एंड वेब डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स, ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे अपने नोट्स में तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। इफ़ आई टॉक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इफ़ आई टॉक ऑफ द टेंसेस कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जहाँ पे आपने सारे फॉर्मूले लिख दिए, एक आध दो सेंटेंस का एग्जाम्पल दे दिया एंड यू आर डन विद द टेंसेस चैप्टर। टेंसेस चैप्टर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चों को लगता है। सिमिलरली इफ आई टॉक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दैट कैन बी ऑल्सो क्लियर्ड in the form of a table. You can easily create a table. Active voice ये tense में कैसे होगा, passive voice ये tense में कैसे होगा, that can be also created in a tabular form in a very easy way. You see the table and it's registered over here. Okay, so in this way use of flow charts, mind maps, diagrams, ये सब चीज़ें बहुत बहुत important है अगर आप अपने अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं। तो नोट्स ऐसे बनाइए जो आपको देख के ही समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक में ये चीज़ है, आपको उसमें घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपके नोट्स में और आपके टेक्स्ट बुक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा,
राइट. नेक्स्ट पॉइंट इफ आई टॉक ऑफ, हाँ पेन की बात हमने की थी, तो पेन की बात, दिस इज़ वॉट माई टीचर्स टोल्ड मी. सो व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन, यूज़ योर बॉल पॉइंट पेन, बिकॉज अगर पानी वानी गिर गया उसके ऊपर तो दैट वुड नॉट स्प्रेड आउट. Rather than using a gel pen or an ink pen, use ballpoint pen. So this can also be one of the tip if you want to use it. Okay. So the next point that I would suggest would be using sticky notes. अब sticky notes के इतने सारे uses, you can see one here as well. यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में जो कुछ भी है वो हमने लगाया हुआ है. सो इन दिस वे स्टिकी नोट्स बिकम्स वेरी वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी ईजी व्हेन यू नीड टू ऐड समथिंग टू योर नोट्स. हो सकता है यू रिमेंबर ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट दैट योर टीचर टोल्ड यू अबाउट सम टॉपिक, तो आपने वहाँ पे स्टिकी नोट्स स्टिक कर देना, और यू कैन यूज़ योर स्टिकी नोट्स टू स्टिक समथिंग नियर योर टेबल एज एन आई हैव डन इट ओवर हियर. तो इन दिस वे यूजिंग स्टिकी नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है, या फिर हो सकता है कि आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट शुड बी एडेड ओवर हियर, और आई शुड बी रिमेंबरिंग दिस पॉइंट और समथिंग लाइक दैट, यू कैन यूज़ योर स्टिकी नोट्स ऑन द टेक्स्ट बुक एज वेल और इन योर नोट्स. स्टिकी नोट्स के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, यू कैन, इट कम्स इन वेरियस कलर्स, एंड पतलू वाला भी आता है विच यू कैन यूज़ इवन दैट. तो यू कैन यूज़ ऑल सच थिंग्स एंड मेक योर नोट्स वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. और नोट्स तो हमको ऐसे बनाने हैं जो हमको एंड मोमेंट तक काम पे आए, राइट. कम से कम एग्ज़ाम तक तो काम में आने चाहिए, खास करके एग्ज़ाम के लिए काम में आना चाहिए, है ना. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड स्ट्रेस अपॉन इज़ when you might have diagrams, you might have your maps, you might have your graphs, everything in your syllabus, right. So when you are making your notes, do not forget all this, क्योंकि ये ही वो points हैं या areas हैं जहाँ पे बच्चे maximum अपने marks lose कर देते हैं. So when you are making your notes, make sure you make the diagrams then and there. ऐसा नहीं कि नहीं notes बना रहा हूँ, diagram बाद में बना लूँगा, ज़रूरत क्या है, ये मेरे ही तो notes है, देखने कौन आ रहा है. आपके notes हैं, आप देख रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है दैट यू इंक्लूड एवरीथिंग इन योर नोट्स. सो व्हेन यू ड्रॉ समथिंग, व्हेन यू हैव अ ग्राफ अटैच्ड, और व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मैप अलॉन्ग विथ योर नोट्स, दैट बिकम्स अ प्रैक्टिस एज वेल. ओके. और हो सकता है आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ बाय द टाइम आप पढ़ने या फिर एग्जाम तक जाओ, यू बिकम परफेक्ट इन दैट. So इसलिए whenever you're making your notes, do not forget to include your diagrams, your maps, everything into it, because geography में maps are very very important. आपको mark करने होते हैं various regions or various areas where sugarcane is produced or this and that, cotton is produced. जो भी है आपको अपना mindset या अपनी चीज़ें clear रखनी है while you are making your own notes. Be precise, be crisp, use shorter sentences when you are making your notes, use star marks. स्टार मार्क करें. यू कैन यूज़ वेरियस ग्लिटर पेन्स, राइट, कि हाँ ये सर ने बोला है एग्जाम में आने वाला है, तो आई विल बी यूजिंग रेड मार्क. रेड मार्क मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन मार्क means I have already studied. So these are a few examples which you can include in your note making process and make it very exciting and very very easy to learn, so that it helps you, right, and you also enjoy learning from your notes in a very proper way. So these were some of the tips and tricks which I felt was important sharing with you all. सबसे पहला तो study table, second we have discussed about your papers and pens, how it should be very neat and very tidy. Next we have discussed about your flow charts and mind maps. Flow chart and mind map के ऊपर तो I can make an entire video. It is so important. Next we have discussed about sticky notes and how it is important to write in point format rather than using a paragraph format. This way you can make your own notes in a very good way, and I hope you like this video. I hope this video was useful to you all. If yes, do not forget to like, share and subscribe to youtuition. More videos coming up. Till then, stay tuned and happy learning. Thank you.